Hello, Assalamu alaikum, everyone. Good evening. I hope everyone's well, and I hope you enjoyed the beautiful documentary named The Lost Procession. Um, अब से कुछ देर बाद हम बस अपना Q&A स्टार्ट करने वाले हैं, बट बिफोर वी स्टार्ट द Q&A, एनीवन जो बीच में फिल्म के जिन्होंने ज्वाइन किया या जो शुरू से हमें ज्वाइन नहीं कर पाया, जस्ट वांटेड टू टेल यू ऑल that tonight is our opening night of our Chalta Phirta Doc Festival. This is the first film that we have screened. This film has been shot in Berlin and Quetta. And what's going to happen after this is that in the forthcoming weeks, हम और आपके लिए documentaries लाएंगे. कुछ 8 documentaries और बाकी हैं जो अभी देखने हम सब मिलके आने वाले हफ्तों में नवंबर के महीने तक देखेंगे. अभी हमारे साथ मौजूद हैं दो बहुत स्पेशल मेहमान. वन ऑफ देम इज द डायरेक्टर ऑफ द लॉस्ट प्रोसेशन, बानी आबदी. बानी आबदी का आपसे थोड़ा सा तारुफ कराते हैं. बानी इज द डायरेक्टर ऑफ द लॉस्ट प्रोसेशन. बानी का ताल्लुक कराची से है. बानी एक विजुअल आर्टिस्ट हैं. इन्होंने NCA और फिर स्कूल ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो से पढ़ा. और आजकल बानी बर्लिन में बेस्ड हैं और बानी वीडियो और फोटोग्राफी को इस्तेमाल करती हैं टू ऑफन कमेंट अपॉन पॉलिटिक्स एंड कल्चर, और अक्सर ह्यूमर का इस्तेमाल भी अपने काम में करती हैं. बानी का जो काम है सोलो और ग्रुप एग्जीबिशंस दोनों में बहुत प्रेस्टिजियस जगहों पर डिस्प्ले हो चुका है, इंक्लूडिंग शारजा आर्ट फाउंडेशन, मोमा न्यूयॉर्क, गुगनहाइम म्यूजियम न्यूयॉर्क एंड टेट मॉडर्न इन लंदन. इसके साथ साथ हमारे साथ आज मौजूद हैं आसिफ, जिनकी बैक आपने आज फिल्म में भी देखी है और उनकी कुछ तस्वीरें भी आपने फिल्म में स्क्रीन पर मॉनिटर के अंदर जो है वो देखी हैं. आसिफ इज़ अ कोलैबोरेटर ऑन द फिल्म. आसिफ अली मोहम्मद का तारुफ कुछ यूँ है कि आसिफ का ताल्लुक हज़ारा कम्युनिटी से है, क्वेटा की. आसिफ फोटोग्राफी और फिल्म वर्क करते हैं ताकि वो सोशल इकनॉमिक मार्जिनलाइजेशन और परवेजिव वायलेंस को स्टडी कर सकें पाकिस्तान अफगान रीजन में. आसिफ की जो फोटोग्राफी है वो फीचर हो चुकी है BBC, न्यूज़वीक, गार्डियन, डॉन, अल जज़ीरा और मुख्तलिफ जगहों पर एग्जिबिट भी हो चुकी है. और आसिफ के पास एक BA और एक MA है फोटोग्राफी में फ्रॉम मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी, और इस वक्त ये मैग्नम फाउंडेशन के फोटोग्राफी एंड सोशल जस्टिस फेलोशिप के एक फेलो भी हैं. सो क्लियरली यू हैव एन आइडिया दैट वी आर इन द मिडस्ट ऑफ सम स्टार्स टुनाइट. बात शुरू करते हैं और वेलकम करते हैं बानी और आसिफ को. हेलो बानी, हेलो आसिफ. Hello, after that introduction. No, I mean both of you deserve this introduction. इतना जबरदस्त धुआंधार इंट्रोडक्शन है कि मतलब हर किसी का दिल चाहता है कि इसको जरा बार बार भरम के साथ रिपीट करें. बिल्कुल रिपीट कर देना एक दफा. एंड में एक दफा और जाते जाते कि बाय द वे जिनको आपने सुना है भी है म्यूजिक के साथ एक बार. Absolutely, why not? So thank you so much both of you for joining. आप दोनों में से इस वक्त आप दोनों बर्लिन और लंदन में हैं. So thank you हमारे साथ जुड़ने के लिए. और अभी आई एम श्योर हमारे साथ काफ़ी लोग डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, तो मेरा ख्याल है अब हम करते ये हैं कि एक तरफ तो हम रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से कि जो कमेंट्स में सवाल जवाब भेजना शुरू करें, क्योंकि शुरू में हम थोड़े से सवाल पूछेंगे और उसके बाद फिर आपके सवाल जवाब इनकॉर्पोरेट करना शुरू करेंगे. सो एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क बोथ ऑफ आवर गेस्ट टुडे आप प्लीज़ ज़रूर भेजिए. और बानी, सबसे पहले तो आप ज़रा ये बताइए कि आप अपनी फिल्म में कहती हैं कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो पीक हुआ हज़ारा कब्रिस्तान के बारे में, और फिर आपने आसिफ को जो है वो कांटेक्ट किया. आप सबसे पहले तो हमें बानी ये बताएं कि आपका इंटरेस्ट इस स्पेस में और इस जगह के बारे में आखिर इंट्रीग हुआ किस तरह, क्यों आप इंटरेस्टेड फील किया इसके लिए आपने? एक तो मैं कराची की रहने वाली हूँ, तो इस हज़ारा क्वेटा के बारे में और हज़ारा जेनोसाइड जो कहलाई जा सकती है उसके बारे में मेरी अवेयरनेस ऑफ कोर्स है और बहुत इट्स अ कंसर्न. लेकिन द डिसीजन टू मेक कि मैं आखिर इसके बारे में फिल्म बनाऊं, क्योंकि मेरी दूसरी फिल्मों से बहुत मुख्तलिफ है. आई यूजुअली डोंट पिक अप एन इशू पर से, एंड मैं डॉक्यूमेंट्री भी नहीं बनाती, ज़्यादातर फिक्शनल फिल्म्स होती हैं. तो ये इंटरेस्ट ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ बर्लिन में मुहर्रम में आशूरा का जुलूस निकलता है, जैसे मैंने अपने फिल्म में भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ.
और वहाँ आई सॉ द हज़ारा, जो पहली वेव जो आई है यंग हज़ारा, ज़्यादातर मर्दों की, and that really struck me as it came very close to home. और ये सारा जो सवाल है एग्जाइल का, और वतन, अपने वतन छोड़ के लोग कहाँ पूरी दुनिया में भाग रहे हैं, हज़ारा कम्युनिटी जो है, that is a very interesting thing to me, कि आप displacement is a very interesting thing. तो यहाँ से शुरू हुआ, और इसलिए ये भी खास मेरा इंटरेस्ट ये था कि यूरोप में सारा जो तबसरा है मुहाजिरों के बारे में, चाहे वो सीरिया से आ रहे हो, जहाँ से भी आ रहे हो, इस चीज़ पे जाके अटक जाता है कि वो इंटीग्रेट कैसे हो रहे हैं यहाँ जर्मनी में, कैसे ज़बान सीख रहे हैं या नहीं करेंगे, हाउ विल दे अफेक्ट सोसाइटी, इस्लाम का आना। लेकिन ये पूरी कहानी के लोग कितनी इंटेंसिटी से डिस्प्लेस हो रहे हैं, कि सिविलाइजेशनल एक किस्म का डिसरप्शन हो रहा है मुख्तलिफ मुल्कों में, उसके बारे में बहुत कम लोग, वो बैक स्टोरी जो है लोगों की, उसमें किसी को खास इतना इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे वो मैं बहुत जलती हूँ इस बात से। तो हज़ारास ऑफ कोर्स वर द कम्युनिटी दैट वर क्लोजेस्ट टू मी, so that is how I got when I witnessed them and watching Pakistanis being in Berlin, जो पाकिस्तान से भाग के आए हैं, उसमें मुझे बहुत महसूस हुई, और then I decided to make a film about that. और ये फिर डॉक्यूमेंट्री बनाने के सिलसिले में यू नो ये हमेशा सवाल आता है कि मैं होती कौन हूँ इस कम्युनिटी के अंदर जाने वाली, यू नो, बिकॉज दैट्स ये ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी बेसिक पॉलिटिक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री मेकिंग, कि आप कौन हैं और आपके सब्जेक्ट या कम्युनिटी जहाँ आप काम कर रहे हैं वो उनसे आपका क्या रिश्ता है। तो इट जस्ट सो हैपन कि आई बीन वॉचिंग फिल्म्स, बिकॉज हज़ारा कम्युनिटी में ऑफ कोर्स क्वेटा की हज़ारा कम्युनिटी जो है, वहाँ इतने फिल्म मेकर्स, फोटोग्राफर्स, कल्चरल प्रोड्यूसर्स, बहुत, इट्स सो रिच एंड एजुकेटेड एंड प्रोलिफिक, कि वहाँ मुझे बहुत सारे आसिफ से मेरा राब्ता कायम हुआ उस पे, फेसबुक पे सादत अली हैं जिनके मैंने डॉन पे उनका लॉन्ग ऐसे फोटो ऐसे पढ़ा था. So I was actually sitting in Berlin and doing all the research, and that's how I got Asif involved. और बानी, आपने शुरू में थोड़ा सा मेंशन किया कि आपकी अक्सर फिल्में जो हैं वो इससे मुख्तलिफ होती हैं, तो थोड़ा सा इस बारे में भी बात करते हैं कि आपको ये आइडिया बर्लिन में आया, फिर इस फिल्म का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा क्वेटा में शूट हुआ है. आपका जनरली फिल्म्स बनाने का प्रोसेस किस तरह का होता है, और इस डॉक्यूमेंट्री में प्रोसेस किस तरह से डिफरेंट रहा है? मेरा बहुत मुख्तलिफ होता है. हमेशा मैं अपने दोस्तों से, हम लोग हंसते हैं, मैं कहती हूँ मेरे ख्याल है कि मैं बहुत लेजी हूँ, क्योंकि मेरी सारी फिल्में जो हैं दे कैन बी ऑफन मिस्टेकन फॉर डॉक्यूमेंट्री. एक मेरी बहुत पुरानी फिल्म है जो मैं हमेशा दिखाती हूँ और मैं कोट करती हूँ, जिसमें शहर कराची में शूट हुई है, जहाँ सड़कों पे लोग ट्रैफिक पुलिस ने रोका हुआ है, लोग इंतजार कर रहे हैं क्योंकि VIP आने वाला है शहर में. और वो एक बहुत ही सिंबॉलिक मोमेंट है, वो इंतजार का, कि पाकिस्तानी और हम लोग जो है कॉन्स्टेंटली किसी चीज़ के लिए इंतजार कर रहे हैं. तो ये कैफियत जो है इंतजार करने की, उस पर मैंने बहुत काम किया है. बिकॉज तो फॉर इंस्टेंस वो वाला फिल्म जो थी जिसमें एक VIP आने वाला है, एंड आई एम शोइंग दीज सीन्स ऑफ पीपल वेटिंग, वो सारी स्क्रिप्ट हुई थी. तो हर चीज़, हर डिटेल, ट्रैफिक में क्या हो रहा है, कौन किससे सिगरेट ले रहा है, कौन किससे, हर चीज़ मैंने प्लान करी और फिर मैंने एग्जीक्यूट करी. लेकिन देखने में लगता है कि डॉक्यूमेंट्री है, सिवाय ये कि उसमें ट्रैक शॉट्स हैं और क्लोजअप्स हैं जो डॉक्यूमेंट्री में नहीं हो सकते. तो सिर्फ फिल्म मेकर्स ये कह सकते हैं कि ऑब्वियसली ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है. लेकिन क्योंकि वहाँ कोई प्रोटैगनिस्ट आपस में बातें नहीं कर रहे, कोई कैरेक्टर नहीं, बस एक कहानी है, एक लम्हा है जो मैं खींचती हूँ, जो गुजर जाता है. that was very much a fictional thing. और आमतौर पे मैं इस किस्म के मोमेंट्स को एक्सप्लोर करती हूँ. इस फिल्म में बहुत मुख्तलिफ था, बिकॉज इट्स बहुत ही संजीदा हकीकत है, और इसमें एक तो ह्यूमर लाना, तो इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, देयर इज नथिंग ह्यूमरस. तो इट वाज अ बिग डिलेमा कि मैं कैसे इसको ट्रीट करूं. एंड आई थिंक दैट आई डिड differently was, इसी तरह it actually became a story about Asif. That was the only way I felt I could approach it, because Asif is a friend
और उसका अपना काम फोटोग्राफी है, फिल्म मेकिंग है, और वो भी इसी क्वेश्चन में और प्रोजेक्ट में, चैलेंज में इन्वॉल्व है कि ये कहानी कैसे बताई जाए. So it was very different in that way that I actually shot real people. लेकिन इसमें भी कैरेक्टर्स सारे 3 किरदार हैं. एक वालदा हैं जो कब्र पे बैठी हुई हैं, एक पार्कूर आर्टिस्ट है, आसिफ है. They became almost fictional characters for me. तो इस तरह से आई एम स्टिल टेलिंग अ स्टोरी. आसिफ, मेरा आपसे सवाल ये है कि बानी, आप जब हम आपको डॉक्यूमेंट्री में आपके चेहरे का कुछ हिस्सा देखते हैं और फिर आपको अपने मॉनिटर के सामने देखते हैं तस्वीरों को एक के बाद एक रिव्यू करते हुए, तो हमें बानी ये कहते हुए सुनाई देती हैं कि यू आर समवन हु इज ट्राइंग टू was trying to tell the story of the trying to figure out how to tell the story of the Hazara people. आप मुझे बताएं हज़ारा के आसिफ कि आप उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आप एक फ़र्द हैं उस कम्युनिटी में, सो वी कांट इवन एक्सपेक्ट यू टू आंसर फॉर द एंटायर कम्युनिटी अनलेस यू रियली वांट टू. बट आप मुझे ये बताएं कि ये कितनी कोई पेचीदा स्ट्रगल है टू एक्चुअली ट्राई टू फिगर आउट द स्टोरी ऑफ एन एंटायर कम्युनिटी दैट हैज गॉन थ्रू सो मच इन पाकिस्तान एंड इवन इन अफगानिस्तान, और इस स्टोरी की मल्टीपल लेयर्स क्या हैं जो आप समझते हैं कि अभी तक हमें नहीं पता? I think that is a question जो अभी भी कई सालों के बाद काम करने में, जब आप एक किसी के घर जाते हैं, फॉर इंस्टेंस बीट एनीवन फ्रॉम एनी फील्ड ऑफ लाइफ, जब आप उनके घर जाते हो देन यू जब आपकी बातचीत होती है तो then you find something new, totally new, कि अभी इसमें अभी क्या, I mean what are the layers, और कई सालों से then you find out कि अगर कोई बाहर भी जाता है पाकिस्तान से या कोयटा से बाहर, जब वो वापस आता है then they have their own new set of problems. तो इसमें हमेशा ये हमेशा मुसलसल चेंज होता रहता है the layers if you would. तो दूसरी बात, अगर आप कहें कि किस तरह से if you can tell the whole story, I still get nightmares about how to get everything together and then because it's a big picture जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियाँ इन्वॉल्व है, जिसमें टारगेट किलिंग सर फहरिस्त है, उसके बाद एजुकेशन, उसके बाद जो यूथ है जो अभी स्टक दो कम्युनिटी के अंदर स्टक है, किसी बाहर जाते भी है तो बहुत ख़तरों के साथ और जहन में सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा. द सिचुएशन राइट नाउ इज इतना ख़राब नहीं है जितना पहले हुआ करता था, मगर ये हमेशा से इस तरह की जो एक मरहला है जो हमेशा चेंज होता है. तो एंड आई फाइंड इट एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग. और मैं बानी से जब हमारी इनिशियली बात हुई, बानी को भी मैं कह रहा था कि बानी आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच दिस प्रोजेक्ट माई सेल्फ बीइंग फ्रॉम द कम्युनिटी. तो मैं जब इसको अप्रोच करना चाहता हूँ मुसलसल मुख्तलिफ एंगल से, आई फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बिकॉज डिफरेंट फैक्टर्स आपको ओवरवेलम करते हैं. सो बानी, आई थिंक शी अंडरस्टूड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, एंड देन इट वाज अमेजिंग टू हैव बानी एज योर पड़ोस, जो ना पड़ोस के व्यू जो है. I think it's very important. It wasn't like a totally outsider, क्योंकि outsider तो कहीं से भी आके ना वो जल्दी न्यूज़ क्लिप बना के सबको जज करके ना चला जाए. So with Bani, I think she knew about the situation कि क्या हो रहा है कोयटा में target killing का. And it's also, I mean, also I'm Shia myself, and I was living in Asif's house, और हम लोग सुबह को जब निकलते थे, आसिफ की वालदा, who I became very fond of, वो हजरत अब्बास के अलम के नीचे से उसको चूम के हम लोग निकलते थे. And that was, these are such touching rituals. I mean, it's also कितना शदीद खौफ, आप कितने शदीद खौफ में मुब्तला हैं, and that is something which is one can't even imagine outside the community. और आसिफ और उसका दोस्त मुझे पिकअप करने आए एयरपोर्ट से, and we were having this conversation कि वहाँ तो करीम्स की मरियाबाद और हजारा टाउन में करीम्स की टैक्सीज हैं, अंदर जाती भी नहीं. सो इतनी एक गेटोइजेशन है. और आप जर्मनी में छोड़ें, आई मीन सबसे
फ्रस्ट्रेटिंग बात यह है कि पाकिस्तान इतने पॉलिटिकली एपैथेटिक पाकिस्तानी ज़्यादातर कितने एपैथेटिक लोग हैं कि कश्मीर के लिए और फ़लस्तीन के लिए तो दिल टूटा जाता है, लेकिन ये कुछ नहीं पता कि हज़ारा व्हाट इज़ हैपनिंग एंड किस चीज़ के लिए दे शुड स्टैंड अप फॉर। तो इस किस्म का मेरे लिए वहाँ जाके ये एक तो खास हज़ारा कल्चर विटनेस करना, which is very Iranian in many ways. It was very moving. So it was very वहाँ रहना, आसिफ के साथ फिर continue करना बातें, editing, then meeting here in Europe many times. So it was very intense to be close to this situation through a friend. और आसिफ, मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। और बानी, ऑब्वियसली आप लोगों ने, क्योंकि ये फिल्म जाहिर है मिल के बनाई है, तो इसमें बहुत से सीन्स हैं जो कि इंटरेस्टिंग है कि मैंने कुछ चीज़ें नोट की थी, मगर अब हमारे पास एक सवाल भी जो है इस वक्त आया है। वील कंबाइन लाइक टू क्वेश्चंस बेसिकली। हमारे पास एक सवाल पहले आया है असद पबानी का, जिन्होंने कहा है कि why has parkour become so big in the Hazara community? Is there any symbolism to physically using the walls that box you in to express yourself, or am I reading too much into it? और जब मैं भी ये फिल्म देख रही थी तो कई जगहों पर, ऑब्वियसली मेरा क्वेटा काफ़ी जाना हुआ है और मेरा हज़ारा एरियाज में भी काफ़ी जाना हुआ है, मगर जब आप ये चीज़ एज अ लाइक इन अ फिल्म देखते हैं तो आई थिंक वो आपको और ज़्यादा सही दबा के हिट करती है। और मतलब अपने सीन बेसिकली फिल्म में देख रहे थे, राइट, कि लोग अपने घर जाने के लिए अपना NIC चेक करा रहे हैं चेक पोस्ट पर। इवन लाइक द बॉय who's doing parkour, एक पॉइंट पे लगता है जैसे वो ऑलमोस्ट यू नो उस दीवार से ही शायद लड़ रहा है ऑलमोस्ट, जिससे वो अपनी स्किल को दिखा रहा है। या इवन when we are seeing all of these pictures in your monitor, Asif, sometimes the pictures look like they're boxed in, and I don't know if you were going for that or not, but हमें तो ये देख के लगा, और शायद असद को भी यही लगा है। तो मेरा आपसे थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस से रिलेटेड भी सवाल है, और बानी, maybe you can comment on this later, and we can maybe ask Asif first. कि Asif, आप मुझे ये बताएं कि for many people who have not been to Quetta, for many people who just see Hazara people only when they are attacked in large numbers, and God forbid उसके बाद फिर वो एक बड़ी खबर बनती है और उसके बाद वो टीवी पर आती है, वो तमाम लोग जिनको आपकी कम्युनिटी से कोई ज़्यादा आशनाई इस वक्त नहीं है, आप क्या बताना चाहेंगे कि क्वेटा में या पाकिस्तान में हज़ारा होना एक्चुअली होता कैसा है? I'm not gonna. I think एक तो होता है ना कि physical features, कि आप कहाँ से है, यहाँ से है, the small talk, जब आप किसी से मिलते हैं, अच्छा बल्दिस्तान से हो, चाइना से हो, फिलीपीन से हो, तस्वीर खींच ले आपके साथ, और तो तस्वीर खींचते लोग, और दूसरा, I hope I'm still on live. Let me just go because my screen just disappeared. Hello. Okay, we're back. Sorry, पता नहीं. Okay. Yeah, So we wanted to give you the spotlight, but I think okay. completely fine answer. Like क्या हो गया, ये क्वेश्चन इतना भारी कि इंटरनेट खराब हो गया। तो पहले तो द स्मॉल टॉक कि आप कहाँ से हो, फिर आके तस्वीर खींचते हैं। अगर आप पहले खामोश रहो तो आगे कैन आई टेक अ पिक्चर, जब तस्वीर लेते इस्लामाबाद में मैं गया था शाह फैसल मस्जिद, तो वो समझते ही पता नहीं कहाँ कोरियन कहाँ से, तो तस्वीर खींचने जब मैं कहता था कोयटा से, तो वो कहता अच्छा अच्छा चले आगे बढ़े न। तो ओके फाइन, छोड़ो इसको ना, हम समझे कि कोई अंग्रेज है। So it's that part of the अच्छी बातें, मगर उसके बाद जो बुरी बातें, आप हमेशा से जब लोगों से मिलते हो तो कहते हैं हाँ आपकी कम्युनिटी जो रोड पे अपने लाशें सर्दी में बैठ के जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन अ फ्यू थिंग्स टू देम कि हाँ ऐसे हुआ था अनफॉर्चुनेटली, और हमारी कम्युनिटी अभी भी है, it's not one of the safest place in Pakistan, but things are getting better. So so optimistically, like you have to show them a good positive vibes, but at the same time आप सोचते हो कि
अगर किस हद तक बंदा पॉजिटिव होके डिस्क्रिप्शन दे सकता है. देयर आर थिंग्स वेयर यू हैव टू कि बंदा आंख बंद करके भी तो ऐसे नहीं कह सकता कि बस सब कुछ लवी डवी कोयटा में है, बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स ऑन अ डेली बेसिस. खुसूसन और दूसरी बात हज़ारा पार्कोर की, जब आपने जो उनके बारे में जो पाकिस्तान में लोग देखते हैं टीवी पे, तो उनका जर्नी जो है काफ़ी व्हाट आई फाइंड रियली फैसिनेटिंग इज़ जब वो आते हैं मरियाबाद, सो मरियाबाद से डर के एयरपोर्ट जाते हैं और एयरपोर्ट से फिर जहाज़ पे बैठ के एंड देन देयर जर्नी इज़ नेक्स्ट डे ऑन लाइव टीवी इन फ्रंट ऑफ लाइक thousands people. So that is like from one extreme to another extreme is really fascinating कि अब आप घर से निकलते हो डर के, फिर tomorrow you are in front of like लोगों के सामने मॉर्निंग टीवी में सेलिब्रिटीज के साथ आप गेस्ट अपीयरेंस देते हो एंड देन द नेक्स्ट डे दे कम आउट. So this two extreme of sort of two end of extremes. I think for parkours के लिए तो वो जब बैठते हैं तो वो सोचते भी है कि okay fine सुबह को क्या हुआ था, अभी शाम को क्या है, and then obviously they get the same day flight and then come back to Quetta. और आई थिंक बानी आर्टिकुलेटेड इट क्वाइट नाइसली जब उन्होंने कहा कि ये पार्कोर जब पैलेस्टाइन में और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में It's quite popular. I mean, in answer to the question that was asked, parkour is, interestingly enough, it grew in the suburbs of Paris with the North African, with the African community there, and then, but it's very popular in Palestine and in Kashmir and also in Syria now. So it is very much a martial art that exists in conflict zones. It's actually to do with being able to escape the forces, like security forces or violence somehow. So it's developing your skill to escape. That's where it comes from. और अब हर चीज़ अब YouTube वगैरह पे देख सकते हैं. So it's no coincidence that it's also exists in Hazara community. How did the two of you decide on the three characters that we see in the film? So I mean, this is actually the film. Asef is my character. So Asef didn't. I have made the decisions of the three characters, and Asef is one of my characters. Right. But I was interested because symbolically, the character माँ का जो किरदार है, it's very important in this story. The lady in the film is actually Asef's mother. She's acting for me. The parkour artist is a friend of Asef's, and I was very interested. I'd been watching parkour things, and Asef was a friend of mine. So, sare levels of different kinds of characters one could find. I could have done more. They're very interesting characters in the Hazara community, but these three were enough. And there's the Santarash as well, who's carving stone. Yes. Right. We have a question, Bani, and the question is from Muhui is the name that appears on screen at least. और ये पूछते हैं, in the film we never hear from the people in Quetta, not even from Asef, and we only hear a voiceover from Miss Abidi. Why was that? Because it's not meant to be an infomercial, so it's not. I'm not doing an exhaustive documentary on the plight of Hazaras. It's very much a subjective impression of space. It's about the geography, about the psychology of the space. So that was definitely a very. Sorry, my phone is ringing. It shouldn't be ringing. So that I think it wasn't because it is not a documentary of the kind कि मैं interviews लूँ और लोग बातें करें. I refer to my conversation with Asef, so I bring in his voice, and it's more of like I said, एक खाका खींचा है of a certain locality. I think also what's important to understand is also कि हम I think अक्सर कुछ तरह की documentaries क्योंकि ज़्यादा देखते हैं
तो जब हम कोई थोड़ी सी मुख्तलिफ तरह की डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो आई थिंक क्योंकि हमें आदत नहीं है उसकी वजह से भी हमें कभी कंफ्यूजन हो सकती है कि ये क्या हुआ है, राइट? हाँ, लेकिन exactly. ऑब्वियसली आई थिंक एक मकसद ये इन सारी फिल्म्स को लाने का ये भी है कि डॉक्यूमेंट्रीज बहुत तरह की होती हैं, नॉट जस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग बल्कि उनकी नेचर बहुत डिफरेंट होती है। कहीं पर डायरेक्टर जो है वो काफ़ी एविडेंटली प्रेजेंट होता है, कहीं पर नहीं होता, कहीं पर किसी का कोई एम होता है और कहीं पर कोई और। मैं आपसे आप दोनों से ये भी पूछना चाहती हूँ इस वक्त कि आपने आई वांट टू आस्क यू about that wall that we see जिस पे पाकिस्तान का झंडा बना हुआ है और उस पे स्टंट्स जो है वो होने की कोशिश हो रही है मुसलसल। I want to ask both of you, Bani, maybe you first and then Asif you second. What is that wall and whatever the boy is trying to do on that wall mean to you? I think that's quite a kind of literal shot, of course. That wall was there. I found it. I think आसिफ की photography में मैंने पहले देखी. फिर जब मैं shoot करने गई तो फिर मैंने आसिफ से कहा कि please मुझे वहाँ ले जाओ and let's take Ali, the parkour artist there. And then we stayed there and we shot around it, against it, in many ways. So of course it's a very literal shot. It's the idea of bouncing back off, trying to escape Pakistan and escape this. But also, what I find really interesting is, in my experience, is that all the Hazaras I met are highly patriotic Pakistanis, and that's the most heartbreaking thing. That there's a lot of pride and happiness for being Pakistanis, and so it was kind of that. Pakistan ka jhanda wahan paint hua hai, usme they're trying to. He is trying to escape it, bounce off of it, and not being able to. So that was a very clear motivation for me. The parkour character is like a rat caught in a labyrinth, or वो escape करने की कोशिश कर रहा है constantly. So that's why I have him throughout the film. I have shot him in multiple places, and I have him punctuated through the film. But Asif will be able to tell you more about that particular location. I think जिस दिन हम शूट करना चाह रहे तो I think Habib our cameraman he said कि वो wall I think is been repainted और उस पे उसके ऊपर then I remember I'm not sure Bani if you remember तो Habib कह रहा था कि that wall doesn't exist anymore तो उस पे पता नहीं किसी ने तो I think you were like damn अब क्या किया जाए अभी हम yeah we need to go and find that wall but then I was pretty sure कि नहीं वो wall क्योंकि same thing people would लोग दूसरी चीजों को आसानी से दूसरी चीजों के ऊपर ग्राफिटी के ऊपर आसानी से पेंट कर लेते हैं मगर परचम के ऊपर वो दे विल मेक श्योर कि ये रहे काफी दिनों सो दैट वाज समथिंग इन माय माइंड मैंने कहा वो तो रहेगा डेफिनेटली वंस इज बीन पेंटेड वो क्योंकि इट वाज सच ऑफ अ बिग स्केल काफी बड़ा झंडा और वहां पे लोग I mean it's a stunning wall right वहाँ landscape पीछे और वो दीवार I mean, you couldn't find a more symbolically sort of painful sight in some ways. Yeah. बिल्कुल और पीछे वो जो पहाड़ जो बिल्कुल जो भी देखते हैं मरियाबाद पहाड़ जो बिल्कुल लोगों के लिए एक सिंबल ऑफ आइडेंटिटी बन चुका है ना मरियाबाद पहाड़ दूर दूर से लोग देखते हैं कि वहाँ पे मरियाबाद है सो आई थिंक दैट वाज आल्सो इम्पोर्टेंट टू बी शोन इन द फिल्म के ये पहाड़ जो है बहुत ही लोगों के दिलों के नज़दीक भी है और जहाँ पे लोग जाते हैं कब्रिस्तान से ऊपर आगे पहाड़ पे जहाँ उनके घर भी वहीं पे है सो आई थिंक दैट वाज a very important part to be shown in the film. Right. Also, I mean, I think there ये जो moments हैं कुछ फिल्म में, for instance, ये कब्रिस्तान तो है ही और ये कब्रिस्तान तो काफ़ी आई थिंक पाकिस्तान की न्यूज़ में और जहाँ जब भी कोई कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है तो इसके बारे में शॉर्ट्स बनाता है बट देन वो जो झूले हैं कब्रिस्तान के अंदर I think that's just like a moment where you go like, oh, ये क्या हो रहा है? That is the most amazing thing. एक तो कब्रिस्तान जिसमें फिल्म में भी कहती हूँ कब्रिस्तान आसिफ के घर के बिल्कुल पीछे तो आप खिड़की से कब्रिस्तान देख सकते हैं फिर तो ये लोग तो जाके वहाँ इट्स अ हैंग आउट स्पेस राइट और वहाँ बट वही तो एक बहुत ही टचिंग रियलिटी है कि इट्स एन एफर्मेशन ऑफ लाइफ और वहीं बाजार लगता है
वहीं मेला होता है, वहीं कब्रें हैं, तो उससे मौत से जो रिश्ता है इस कम्युनिटी का, दैट्स you can't compare it with what we have in urban centers or with this उससे मौत से it's so people are literally coming to pay and spend time with the family members they've lost. I mean, आसिफ वो जो स्टोरी तुम बता रहे थे कि which is extremely tragic कि वो बच्चा जो who was a victim of terrorist attack, उसके दोस्त उसकी कब्र के साथ आके फुटबॉल खेलते थे या कुछ. Which No, one? it's not in my film, but you told me about a child who died and his friends would come and play football or cricket near his grave. Oh yeah, it's very common. हाँ, ऊपर जहाँ पे कब्रिस्तान, जहाँ there is a main part of कब्रिस्तान, और ऊपर जो है ना 3-4 ऐसे कब्रें, because it's expanding, तो जगह कम हो रही है. कब्रिस्तान जो है ना पहले जो बहुत जैसे वहाँ पे प्लेन ग्राउंड काफी था, तो अभी उसमें क्या होगा कि एडिशनल जो कब्रें हैं, और उसके अलावा ऑफ कोर्स देयर इज दिस चाइल्ड हु सॉर्ट ऑफ दे प्ले एंड दे ट्राई टू स्टे क्लोज टू द फैमिलीज. हाँ चलो हम जाते हैं, खेलते हैं, but at the same time this is my father's grave, I'm gonna try to stay close to it as much as possibly. वो the relationship, and also एक मेरे दोस्त ने फिल्म भी बनाई थी जिसका नाम था कब्र पदर, which means Which is beautiful. What's his name? अली मेहदी. हाँ हाँ, उसमें पता क्या होता है कि वो दिखाता है. oh I think this is the film that was, I think you were referring to, Bani. So उसमें क्या होता है कि हाँ, तो उसमें वो ये बच्चा कहता है कि दूसरे लोगों के कब्रों पे इतना लोगों का रश होता है सुबह दोपहर शाम. सो दैट्स आल्सो अनदर थिंग. जब शाम को लोग नॉर्मली वॉक करने के लिए जाते हैं या जाके बाहर कहीं ढाबे पे बैठ के, मगर कोयटा में क्या होता है कि चलो कब्रिस्तान घूम के आते हैं. सो उसमें क्या होता है, सो कब्रिस्तान घूम के आना इज लाइक टू पे. शहीदों से भी मिल लेते हैं, फिर वॉक भी हो जाएगी, और वहाँ पे चाय भी पी लेंगे और वापस भी आ जाएंगे. तो इस पे एक दोस्त ने फिक्शन फिल्म बनाई थी जिसमें वो बच्चा कहता है कि दूसरे लोगों के कब्रों पे लोग जाते हैं, व्हाई डोंट यू. सो दिस बॉय बिकम्स ऑलमोस्ट ऑब्सेस्ड कि मेरे वालिद के कब्र पे जो नेचुरली डाइड, इस पे क्यों लोग नहीं आते. सो इट बिकेम्स ऑलमोस्ट या ऑब्सेशन के क्यों नहीं होता. सो ही थॉट कि लोगों के कब्रों पे जाना अमूमन दिस इज अ नॉर्म, but no, people जाते हैं. तो do you know what I'm trying to say? So there's always a confusion between. I mean, it's almost like a hierarchy of grief that people who've been subjected to a natural death are not given that same kind. That's what the story is about. Yeah. But it was stunning because it's about कि director जो है जिसने बनाई है. I mean, the story is basically about competing whose death is more important. लेकिन आपकी असलियत इतनी firmly उसके अंदर ensconced है कि आप हर तरफ से मौत से surrounded हैं. But yeah, ये इससे एक तो कब्रिस्तान से the life of the कब्रिस्तान is like unlike other places I've seen, but also the relationship with faith, ईमान से जो भी लोगों का रिश्ता है वो इतना गहरा है as a result of the cruelty that has happened. And I think that's what you see when all the alams and the जो मन्नतों के बांधे हुए धागे and all of that. Especially now कि जब आशूरा चल रहा है, तो I think people look forward to it quite. Just to add to what Bani is saying कि जैसे भी आशूरा, इनफैक्ट हया से भी जब हमारी बात हो रही थी पिछले साल, डॉक्यूमेंट्री चलता फिरता डॉक्यूमेंट्री के लिए जब आप वेन्यू देख रहे थे, तो उन दिनों भी वन ऑफ द पॉइंट्स was मैं हया को कह रहा था कि मेक श्योर कि आप मुहर्रम के इर्द गिर्द जो डेट्स है, मेक श्योर यू गो आइदर बिफोर मुहर्रम और आफ्टर, बिकॉज मुहर्रम के दिनों में ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सब चीज जो है उसी आशूरा के जुलूस के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व होती है. सो आई थिंक दैट इज समथिंग. Bilkul. And I think, I mean, this month, especially, I mean, I think for the Muslim world, like in general, but obviously, specifically so for Shia Muslims, I think, uski, especially Pakistan में, but also in other countries of the world, I think उसकी तो अहमियत मतलब हमेशा से है और हिस्टोरिकली है, और मतलब उससे इतनी अहम हस्तियां जुड़ी हुई हैं. लेकिन पाकिस्तान में तो आई थिंक पॉलिटिकल नेचर का वायलेंस कुछ अरसे से इतना ज़्यादा हुआ है अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी के आई थिंक इट ऑल्सो in like correct me if I'm wrong, but in some ways it has become like a month of refuge of sorts where you can conveniently express your grief about not just that huge incident that happened
centuries away, but Ago. also things that must have happened to so many have happened to people, to families, to individuals. और मुझे आप ये बताएं आसिफ के इस पर तो अभी बानी ने काफ़ी तफसील से बात की कि कब्रिस्तान, और फिर आपने भी उसके बारे में बताया कि कब्रिस्तान के बारे में अब मतलब एक जो पर्सपेक्टिव है वो कुछ यूं है हज़ारा कब्रिस्तान के बारे में कि वहाँ हम जाएंगे, वो एक स्पेस भी है, बानी ने कहा कि वो एक तकरीबन एक हैंग आउट स्पेस भी है, वहाँ पर आप शहीदों से भी मिल लेंगे, आप बच्चे जो है वो अपने दोस्त की कब्र के पास फुटबॉल भी खेल लेंगे फॉर इंस्टेंस। मुझे आप आसिफ ये बताएं कि आपको कब ये एहसास होना शुरू हुआ था अपनी पाकिस्तानी सॉर्ट ऑफ लाइफ में, जब आप वहाँ पर जब आप वक्त गुजार रहे थे, आपको ये कब एहसास हुआ था कि अब आपका जो शहर है वो ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है आपके लिए और आपकी कम्युनिटी के लिए? और उसी के हवाले से मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि ये जो कब्रिस्तान की एक इम्पोर्टेंस है और जो हायरार्की ऑफ ग्रीफ है, ये आपको क्या लगता है कि जब आप बहुत छोटे थे 6-7 साल के, क्या ये तब थी जो अब है when you are much older? फर्स्ट ऑफ ऑल वो जब हालात शुरू हुए थे ख़राब होना, डेफिनेटली 2001 1999 फिर 2001, दैट इज़ दैट पॉइंट इन टाइम जब जहाँ पे भी बात होती है लोग कहते हैं कि 2001 उसके बाद जो है ना हादसात मुसलसल बैक टू बैक रूनुमा होना शुरू हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट पे पुलिस कैडेट पे सॉरी जब अटैक हुआ था, जो हज़ारा 3-7-8 जब जा रहे थे ट्रेनिंग के लिए, फिर उसके बाद मुतवातिर बैक टू बैक असैसिनेशंस, और तो गुज़िश्ता 20 सालों में पर्टिकुलरली, और मैं जब उसको कंपेयर करते हैं आप 90s से 80s से, सो आई थिंक व्हाट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग इज़ कि जब हम स्कूल जाते थे तो क्या होता था कि आप you choose a school regardless of where it's based. आप कहते हैं अच्छा बाजार में जहाँ पे भी है ना, you choose के कहाँ पे जहाँ पे भी है, लियाकत रोड पे, तो so that was something that we had the luxury of, if I may, or the option of, तो अच्छा यहाँ पे जाके ले लेते हैं, बस कोई मसला नहीं है. Then now you don't have those options. It's just the school which is within your community, आपका मोहल्ले के अंदर जो स्कूल है आप वहाँ पे रहो, which results in so many downsides. For instance, अभी जो नई जनरेशन है, they hardly speak Urdu because उनका क्या होता है कि पूरा दिन इंटरेक्शन स्कूल में हज़ारा बच्चों के साथ, वो वहाँ पे भी हज़ारगी में बात करते हैं, घर भी आके हज़ारगी में बात करते हैं. Of course you watch TV, but that's not enough. तो एक मसला ये होता है, और दूसरा जो इंटरेक्शन दूसरे लोगों के साथ, दूसरे नॉन हज़ारा कम्युनिटीज़ के साथ होती है, that's almost shrinking like rapidly. So it's a proper ghettoization. Oh yeah, big time. So and also like coming back jab sorry, I'm kind of sidetracking now. So उसमें जो social behavior में जो changes आ रही है मुसलसल, I think these things, I think especially अभी जो है गुज़िश्ता 5-6 साल में इनके रिजल्ट्स अभी आना शुरू हो रहे हैं, जब आप यूथ से मिलते हो, जब पार्कोर मशहूर होने लगता है, जब लोग जो है दूसरे शहरों की तरफ रुख करने लगते हैं. फॉर इंस्टेंस कराची, ज़्यादातर जो भी बच्चे अभी बड़े होते हैं, दे जस्ट वांट टू मूव टू कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, दे डोंट वांट टू स्टे इन कोयटा. वो जब आप कहो उनको, सो द फर्स्ट थिंग दे वुड से इज कि मैं कोयटा में क्या करूँ, यहाँ पे मैं घर बैठूँ, बाहर भी ना जा सकूँ. So I hope I'm answering your question. Sorry. You are, yeah. And I think your experiences matter a lot, obviously, Asif, for all of us who don't know enough. और क्वेटा, मतलब मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ कि क्वेटा का जो इम्प्रेशन है, क्योंकि 2001 से, और स्पेशली जब प्राइवेट चैनल्स पाकिस्तान में न्यूज़ चैनल्स परवान चढ़े हैं 2003-2004 ऑनवर्ड्स, सो ऑब्वियसली उस वक्त तक पूरे मुल्क के हालात इस तरह के थे और क्वेटा के भी हालात कुछ इतने मज़ेदार नहीं थे, तो शहर का इम्प्रेशन इतना कोई फजूल पड़ा हुआ है लोगों के जहन में. मतलब क्वेटा एक यानी पॉपुलेशन के हिसाब से, मतलब उसकी इतनी हैवी पॉपुलेटेड सिटी नहीं था पहले, लेकिन मतलब उसका तो मतलब हज़ारा कम्युनिटी हो या हज़ारा के अलावा कम्युनिटीज, आई थिंक हमेशा से बहुत सॉलिड किस्म का कल्चर रहा है ऑफ राइटिंग बुक्स, ऑफ राइटिंग पोइट्री,
acting, production, like all of these things were always so much there in the city. और जब भी गुफ्तगू होती है दूसरी एथनिसिटीज के लोगों से भी कोयटा में जो 80s में बड़े हुए या 90s में बड़े हुए, उन्होंने यही कहा कि सब लोग यूनिवर्सिटी एक साथ जाते थे, सबके डिफरेंट जबानें बोलने वाले लोग होते थे. इनफैक्ट आई थिंक कोयटा इज वन ऑफ दोस वेरी फ्यू सिटीज जहाँ पर शायद अब तो नहीं, क्योंकि अब तो ये हो ही नहीं पाता, इंटरमिंगलिंग ही नहीं हो पा रही है लोगों की, लेकिन पहले तो यही होता था कि आप किसी से भी बड़े शख्स से पूछे, एनीवन आई थिंक अबव 40 वुड नो like at least 3 languages, जिसमें उर्दू तो एक साइड पे बाय द वे होती है कि ये तो आती ही है, लेकिन क्योंकि लोगों ने अपने दोस्तों से सीखी भी होती है. इंटर मैरिज भी ना हो पेरेंट्स की, तो उन्होंने दोस्तों के साथ इतना हैंग आउट किया होता है कि आपको एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा जबानें आती होती हैं. और क्योंकि हमें खबरें ही इस तरह की मिलती हैं, राइट, तो लोगों को लगता है कि मतलब आई एम प्रीटी श्योर कि सम पीपल हु माइट बी वाचिंग और हु माइट वॉच दिस लेटर माइट थिंक कि अच्छा आसिफ अभी जो कह रहे हैं कि कोयटा में रह के क्या करना है, अगर आज के लोग पूछते हैं, तो आई थिंक फॉर सम पीपल इट माइट बी एक्चुअली अ रियल क्वेश्चन फ्रॉम द नॉन हजारा कम्युनिटी कि कोयटा में रह के कोई क्या करता होगा, बिकॉज इन पीपल्स माइंड्स इट इज ऑलवेज अ सिटी, इट इज ऑलवेज बीन अ सिटी जो कि बस ठीक है एक छोटा सा शहर है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. इट वाज अ छोटा शहर बट इट वाज फुल ऑफ आर्टिस्ट एसेंशियली, राइट. तो ये क्वेटा इज आल्सो उसका एथनिक मेकअप जो है, डेमोग्राफिक, बलोच एंड पंजाबी, एंड देयर इज जस्ट इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्पेस, और ऑब्वियसली अब इट्स अ बॉर्डर सिटी, तो उसका इतना खास एहसास होता है वहाँ एक्चुअली जाके. आई थिंक आई मस्ट हैव गॉन देयर एज अ चाइल्ड, मैं अब गई हूँ एज एन अडल्ट, and it was very particular. And but I wonder whether people who are from Quetta but not from the Hazara community, whether, I mean, of course we're not bringing Balochistan into this, but it is a very fraught space, and I wonder whether everyone wants to flee Quetta or whether it's just the Hazara community that is wanting to leave. I think with I'm not sure about the other communities, मगर हज़ारा community में especially after the targeted killing के बाद जब हुए हैं limitations, उसमें क्या होता है कि आप अगर कहते हो कि okay fine, like before I would have my job somewhere in the western part of the city, जहाँ पे सरियाब रोड की तरफ, I'm not sure what side it is, मगर सरियाब की तरफ for instance जहाँ पे काफ़ी हादसात हो चुके हैं, so for instance if you are offered in a job वहाँ पे, तो आप then you question it twice. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पेरेंट्स भी आपको कहते हैं कि ओके फाइन, अगर आपको जॉब वहाँ पे करनी है देन यू बेटर थिंक ट्वाइस कि आप वहाँ जाओगे या नहीं. सो दैट्स वन एलिमेंट के एलिमेंट ऑफ सेफ्टी कि वहाँ जाके कुछ ना हो जाए. और दूसरा द होप के यहाँ पे बैठ के क्या करना. आई हैव दिस इज समथिंग आई हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि लोग यहाँ पे बैठ यहाँ पे या कोयटा में क्यों नहीं रह रहे. फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज if they want to rebuild it, okay, fine. Can you rebuild it? Can you go back? Can you undo what's been done? So these are the questions that you cannot really आप समझ नहीं सकते हैं easily. Okay, fine. Then eventually क्या होता है? Then you give up. जैसे जब हम बैठते हैं दोस्त वगैरह, जब हमारी बातें होती हैं कि okay, fine, what's next? Okay, किस हद तक बंदा यहाँ पे, and then आप कहते हैं कि ओके फाइन, यहाँ इसको फिक्स करो, ये चीज़ फिक्स होना चाहिए, मुख्तलिफ एलिमेंट्स, सोशल एलिमेंट्स, पॉलिटिकल एलिमेंट्स, एजुकेशन, रिहाइश, मौसम, then there's so much you can do. Eventually you just give up. Somehow you give up, like for that particular moment in time. फिर उसके बाद आप again you go back home and then you sleep it off and then you wake up again with a fresh mind. So and we've actually had a question from Asad Ali, और असद ने पूछा है, Bani, what role has hope played in this project, if any at all? Yeah, I mean, I think that the interesting thing about hope and negotiating this intensity and gravity is, for me, the idea is that the person जिसके बारे में मैंने जो आसिफ जो है, he's a active, productive person from this community. So he is the hope for me, is that he is negotiate. So I am talking about him and he is talking about his community. And his Asif dilemmas, I don't know whether you guys missed that, लेकिन मुझे जो सबसे चीज बहुत याद है, हमारी जो बातचीत हुई थी फिल्म बनाने से पहले, उसमें आसिफ जो है वो अपनी फिल्म में वो फोटोग्राफी तो करता है, and he's
a brilliant photographer. Lekin on the side, he also at some point started doing these very silly, humorous videos on YouTube, which were literally absurd humor. People cracking, like where you could just sit back and laugh. And the sweetest, I mean, his decision to say, okay, this is much more important then the insistence के मैं बहुत लोगों को याद दिलाता रहूं दिन ब दिन के ये हमारे साथ ये क्या जुल्म हो रहा है. So the idea that we're just people and we're going to live the way we want to. So I think the interesting thing, of course, which we as outsiders don't have anything knowledge about, the cultural industry within the Hazara community is huge. इनके सारे drama Hazargi में, it's a huge project. I mean, diaspora Hazara, local Hazara. So we're just outsiders, and we may never know it, but it's a full-on community with a lot happening. And so people aren't just victims; it's incredibly, proactive. It's a proactive community. So for me, of course, hope is in the fact that they're all articulate, intelligent cultural producers. Absolutely. We also have a question from Fiza Khatri. Fiza is asking, it's great to hear how you both negotiated the politics of representation with so much care. Bani, can you mention one or two specific decisions that were made as a result of these negotiations? It's very difficult now to, I think that the question of, I was very aware constantly that I should not make anything. So things like negotiating, it was again very dark, but negotiating which grave we could shoot. And that was one of the, again, a very surreal moment when Asef, his mother, and I are standing in the graveyard. And I said, well, obviously, we just can't shoot anyone's grave. And Asef said to me at one point, well, I should look for a friend's grave. I mean, and it was so, imagine we don't have these conversations, do we, ever in our life? And Abidi, I get goosebumps thinking of that conversation where we were in search of a grave of somebody we knew. There was this question of, we just can't put anyone on camera. And then the person whose grave we chose is a friend. A relative. Yeah. And that it was Asif's mother who was interacting with the grave. These were characters. It wasn't her son. It was, I put these elements together. So obviously this question of what, and I was very aware that a lot of people in the Hazara community would watch this because I had interacted with them and they would watch it. So of course it is, and a lot of people might feel that it doesn't do justice to the cause. But usme I was very careful, and I had to get I was constantly back and forth with Habib and with Asif while we were shooting. Would this be appropriate? And of course, I got a lot of feedback from them. So it is totally collaborative. I enabled it in some ways because I was interested in initiating it. Like it was almost them saying, "Acha, is tarah karte hain." Wow. And I think also it was amazing to have Bani on board because, like I said, sometimes you need your cousin's point of view, going back to the Padosan point of view, then Agora's point of view. Do you know what I mean? So for us to have Bani within the community initially was really it was refreshing because that she understands like 95 or 80% of the elements. Yeah, but at the same time she would come with, so it was quite relaxing at the same time for once when you give the command to someone else in a way, if I may, not the command but to sort of acha aap drive kar lo 5-10 minute ke liye, and then she was on driver's seat and then she was okay, fine, look at that, look at this, I found this, why this road bumpy, why is it, so these are the different things that she gathered and then put together, which was quite refreshing. Right, but was also willing to take directions, like literal directions, basically, while she was driving. So, no, I think we needed that. We needed someone who knew what she was doing. कि कोई आए और देखे और कहे कि okay, this is how it's been done. Because मेरा जो background mostly photography का था, or you keep shooting your house. It's your mundane, like, मगर कोई आता है कि look, there's this wall, there is
ऐसे कब्र पे जो लोगों के जो धागे जो बांधते हैं लोग अलम के इर्द गिर्द. So these are the little things that Bani was really good at picking, and then she Right. and pointing out and making sense of and putting all these things together and then somehow making sense of it. I mean, I think also that I have tried to present myself as an outsider. It's an outsider reflecting. So whether it's the fact Padosi. that Berlin mein baiti hu, that's why everything when I'm talking, when I talk, it's only Berlin. It's only me clicking on Asif's photographs on my computer. So Hmm. which is to emphasize that I am not there and I am far away and I am telling a story from far away and there is a limit कि मैं किस हद तक इस चीज के करीब हूँ, इस सिचुएशन के करीब. Right. So I think that was very important for me to emphasize that I'm limited in what I'm doing. Sorry, the house is very busy now. Somebody has come. Please continue. I'll be back. Yes, आसिफ, मुझे आपसे ये भी पूछना था कि आपने ज़ाहिर है ये कोई एक डॉक्यूमेंट्री तो है नहीं या एक फिल्म तो है नहीं जिस पे आपने काम किया है, राइट? आई मीन यू हैव बीन वर्किंग फॉर अ व्हाइल ऑन ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, और अभी आपने ये बात तो बताई कि बानी जो है वाज ऑलवेज, यू नो, शी वाज ऑलवेज विलिंग टू टेक इन इन्फो कि आपका उसके बारे में क्या ख्याल है और आपके दोस्तों का इसके बारे में क्या ख्याल है, और आप लोगों ने बहुत एम्पैथेटिक डिसीजंस लिए मिलके कि जी किसकी कब्र को जो है वो फिल्म करना चाहिए और किसी की कब्र को एमी में जाके फिल्म नहीं किया जा सकता. आप मुझे बताएं कि आपके बाकी एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं जब दूसरे मुल्कों से या पाकिस्तान के दूसरे शहरों से कोई उड़ के आता है आपके पास और आपसे कहता है कि ये मेरा क्वेटा का हजारा, मुझे तो वो लफ्ज गाली लगता है बट आई से इट, यू नो, फिक्सर, या इस तरह के अल्फाज लोग कहते हैं कि जी वो हमारा वो बॉय है एक, और वो तर्जुमे भी कर देता है, और वो एक बस एक शख्स है जो कि, यू नो, लाइक आई विल कमांड देम एंड दे शैल लिसन टू मी एंड दे विल मेक थिंग्स हैपन टू मी. मुझे बताइए कि वो एक्सपीरियंसेस क्या आपके, मतलब in your filmmaking or photography career, have you faced those incidents where you have Manoranjan, felt like, yeah. Manoranjan, yeah, Yeah, and yeah. you felt like your entire like community was kind of just objectified by some parachute so-called journalist flying in के बस मैं आ गया हूँ और मैं exoticize करता हूँ भी आगे इन सारे लोगों को. The thing is, Bani ke, it was really now looking back जब January 2019 में जब हम शूट कर रहे थे, so जब मेरी और बानी की बात हो रही थी कि कैसे अप्रोच किया जाए, किस तरह से हम शूट करेंगे, तो उससे एक हफ्ते पहले Eva Zubak came to Mariabad. So that it could be a prime example of how the two comparison. And I said this back then, मेरे ज़हन में तो बिल्कुल वो differentiate करने का था ही नहीं, वो क्या कहते हैं ability. तो मैं बानी से कह रहा था कि okay fine, I'm dealing with Eva Zubak right now, I'll deal with you next week. So I was, and then बाद में I know, तो फिर, and then I was just so naive about these sensitivities of different approaches that you will have. She has a totally different idea of Mariabad. In fact, the people who worked with her sort of wanted to show the exotic people living in the mountains. With Bani, she didn't care. She was just about the grief of the community, the youth, and a few other things that she wanted to pick, because she already knew that we are all the same, but she wanted to just identify those small elements. I hope I'm asking your questions by giving an example. So yeah, I think there has been incidents जब लोग आते हैं जल्दी से देख के फिर कोचा खा के traditional food, and then that's it. So it becomes like a picnic point somehow. It Yeah. does. I think it does. It can easily become a picnic point, especially I think. मतलब आपको इतने सारे लोग मिलते हैं ऐसे हज़ारा कम्युनिटी में खास तौर पे जो कि you know बहुत से लोगों के इंटरव्यूज हो चुके हैं पहले, you know they have, I mean for reasons mostly bad and negative, but उनका
वो किसी विक्टिम की फैमिली से उनका ताल्लुक होता है, किसी सर्वाइवर की फैमिली से ताल्लुक होता है, कैमराज आ चुके हैं बहुत पहले कम्युनिटी में, इंटरव्यूज होते रहे हैं। तो आई थिंक बहुत से लोगों को शायद ये लगता है कि दे हैव परहैप्स नो अदर ऑप्शन बट टू से यस टू द पर्सन हु इज ब्रिंगिंग इन द कैमरा एंड जस्ट फॉलो व्हाटएवर दे वांट यू टू ऑलमोस्ट परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, राइट? तो ये तो एक डेफिनेटली मसला है। और आई थिंक अभी जो आपने जिन ब्लॉगर साहिबा का जिक्र किया उनके बारे में भी कोयटा से रिलेटेड मैंने काफी सारे यही किस्से सुने कि वो शूट कर रही थी और जब वो शूट कर रही थी तो वो कैमरा में इस तरह की बात कह रही थी कि कोयटा बहुत ज्यादा एक सेफ शहर है, लेकिन उनके आसपास ही कोई शायद 4 बड़ी सी गाड़ियों का एक रेला था जिसमें लोग थे जो कि उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो मतलब ये तो कुछ एक ज़ाहिर अजीब सी बातें हैं। और ये भी मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हम उनकी बात को ज्यादा अहमियत देते हैं एज पाकिस्तानीज, राइट? मतलब ये कि लोकल बंदा जब अपनी कहानी बताता है तो उसको उतनी संजीदगी से नहीं लिया जाता, लेकिन जब कोई बाहर से आके जो है वो सिर्फ ये बार बार कहता है कि पॉजिटिव इमेज, पॉजिटिव इमेज, पॉजिटिव इमेज, तो समहाउ जो है वो बात जो है वो बिकती भी है, उसको हिट्स भी मिलते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर। और आई थिंक घर का बंदा जो है वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो घर की मुर्गी दाल बराबर का केस नहीं है। हम सख्त ही सेल्फ कॉन्शियस, आई मीन सच डीपली कॉलोनाइज्ड पीपल कि वो तो दिन रहेगा जब हम अपने लोगों की बातें यू नो वी रिस्पेक्ट दोज ओवर अदर्स। कोई भी बाहर से आ जाए तो बाहर का गोरा ठप्पा इज सो एसेंशियल। So somebody is asking me, asking in the questions of, ek to thank you Sadia Mahmood for saying always trust a woman to tell a story in a much emphatic way. Thank you. I deeply appreciate that. And Sadia Mahmood also previously commented that when we were talking about the graveyard, she did say that the graveyard, so looks like the graveyard is important as a subject because either one becomes a refugee or reaches the graveyard. Yes. So this is interesting. Beautiful. Yeah. So and somebody else is just saying whether there was a storyboard, something about a storyboard. I can't find that question. Yes, I will ask you that. So basically, Capful has asked कि क्या एक तो इनका एक सवाल, बेसिकली इनके 2 सवाल हैं। एक सवाल तो आपके शूटिंग स्टाइल के मुताबिक है, के मुतालिक है कि ये जो विजुअल स्टाइल है ये किस तरह से इमर्ज हुआ, और इन्होंने ये कहा है कि आपकी फिल्म का स्टोरी बोर्ड आपने कैसे बनाया था, क्योंकि इसके अंदर आसिफ की फोटोग्राफ्स भी नजर आती हैं बहुत सारी, लाइक कभी कभी लगता है जैसे उससे कहानी फॉरवर्ड हो रही है, मगर जनरली आपकी फिल्म में स्टोरी बोर्ड कैसे था, स्पेशली नाउ दैट वी नो दैट द कैरेक्टर्स वर पीपल who you knew and you kind of made them interact with those spaces. So how did that how in fact also आप ये काम करती किस तरह है बानी? आप क्या कागज पे बैठ के सोचती हैं या आप चलते चलते I think we only decided, the only thing I had to wait a lot. पहले मैंने Asif came to Karachi, we met, we spoke, but everything was hearsay, so I kind of planned, and then I had to get there and think that these are the characters. I always knew that Asif would be a character in my film, the photographer in my film. So it's transparent. My access into this film is transparent. That is to Asif. But the others, I thought of the characters, and then I knew what I wanted them to do. But the sequence of images and everything comes together much later. Came together in the edit. So it's very open-ended. In this case, it was very open-ended, especially because it was a big struggle to make this film. It's so unlike my work, and it's got such a clear narrative in that sense. So there was no storyboard. Or Asif ka, so all the shots, of course, are directed by me and shot by Habib and Asif. And that is the kind of framing and things is a combination of how I work and both the cameramen frame things. So that is, the aesthetic is a very collective aesthetic. Right. Because I think we can see a bit of all three of you in very much so. Shot. Also because a lot of things I first experienced Quetta through Asif's photography. So already those frames were in my mind. Yes. And I was almost searching the same frames that Asif had shown me. Beautiful. And I would go after them and see how they could be done differently. So it was very beautiful in that way. I was a traveler into somebody else's world. Right. And I briefly entered that world, and we did something we could do together, which is not that somebody asked ke Hazara situation की solution क्या हुई? तो ऐसे तो कोई hope नहीं है कि हम फिल्में इसलिए थोड़ी बनाते हैं कि
solve हो जाएंगी चीजें, लेकिन obviously these are moments and you just want to create memories and archives of images that people who watch the film live with. बिल्कुल। और बानी, आप जब ये फिल्म बनाने वाली थी तो आपके जहन में इंटेंडेड ऑडियंस क्या थी? मतलब कुछ खास थी या कोई भी इस फिल्म को देख लेता? आपके जहन में क्या था कि इसे कौन देखेगा? I mean, it was commissioned for, I had a show in Berlin in a museum, and it was a very big show, and this was the new commission for it. So it was made for that show, which is why I'm speaking in English. And उसके बाद बस ये था कि obviously it would float around, but I was very aware that it's going to be, and I would like actually put it up for people to circulate and download and use. But it was definitely a Berlin audience first, and then a Pakistani audience, of course. Right. Yeah, and I was also wanted to say that I was very interested in the idea of a disembodied jalous. क्या मातम नौहे मर्सी ये सारे रिचुअल्स जो हैं जो मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से एक जगह जमा हुए हैं, what do they mean? Because आशुरे का जलूस जो होता है, it's a very symbolic thing. It's actually a protest, right? अगर आप जलूस का symbol देखें, it's actually a protest. You are, by hook or by crook, you're manifesting yourself out there in a public space every year. Absolutely. Centuries, you've done that. So it's an oral tradition. So for me, it's very strong. And so that's why it's called the lost procession. इसकी मीनिंग क्या होती है इस जलूस की? जब आप बर्लिन के कोने में निकालें, जब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप कर क्या रहे हैं, वहाँ of course they distribute flyers when this happens. लेकिन it's so located, चाहे ईरानी हो या वहाँ पंजाबी वहाँ होते हैं शिया, ये सब कुछ, ये हमारी ज़बान and rituals and everything are so linked to collective history. And I'm very interested in the idea of these disruptors, of all of us being semi-broken people. We get broken all the time and torn away for multiple reasons. And I think I feel that at a personal level as well. I'm from Karachi, so I feel quite separated from it. And so all these things. Personally made me smile actually profusely when I hear those lines के आप कहती हैं कि मैं जो जुलूस के अंदर कभी पंजाबीज और कभी हजारास के बीच में मैं कुछ फ्लोट सा कर रही हूँ, because it says so much about belonging, and you are someone who works there and who makes art there, but you still like despite the fact that in many ways you this is an assumption, but obviously like you were there willingly, but still you want to float in those spaces, and then we see these people who have been forcefully almost told to sort of leave the country, and then they were there as well, and they're interacting with each other, and you see Punjabi Noah as well, and then you see and then you hear some Hazargi, and then I think end में तो बेहाल है, मुझे तो लगा था कि पश्तो है शायद जिसमें बिल्कुल end में सुनाई पंजाबी है. I see. तो वो politics, the politics of refugees are also fascinating. I have to go soon actually, but I would just I just want to say that it's so dark because यहाँ ज़्यादातर हज़ारा आते हैं, फिर ज़्यादातर पाकिस्तानी यहाँ जो हैं, Punjabi boys, they're economic migrants. वो हज़ारा community यहाँ जिन लोगों से बात हुई वो कहने लगे कि अब आप सोचेंगे पंजाबी लड़के जो हैं ये भी कहने लगे कि हम हज़ारा हैं, हमें political asylum चाहिए. So they're competing कि हम भी हज़ारा हैं, हम भी religiously persecuted है, and हज़ारा लोग कह रहे हैं उन्हें भी शक्ल देखिए. It's so literally and the way these things play out. Oh wow, they're really desperate people, and it's it's heartbreaking. Yeah, it is. It is. Fascinating, definitely. And one last question for Asif. आसिफ, हमने अभी बिलोंगिंग की बात कर रहे हैं. आई वांट टू आस्क यू कि ऑब्वियसली इस वक्त हमें जो लोग देख रहे हैं और जो लोग बाद में भी देखेंगे वो हैं तो दुनिया भर से, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हमें अंदाज़ा है कि वो ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं, और इसमें ज़्यादातर लोग शायद पाकिस्तान के अंदर रहने वाले पाकिस्तानी हैं. What would you want to say to anyone who's Pakistani but not Hazara in terms of what they should just understand now, right away, about
your community and about what has happened or what has been done to your community? Oh, that's a difficult question because it has so many layers. I'm sorry. I keep वो layers की मैं बात करता हूँ. I think it just don't just हम भी यहाँ रह रहे हैं सबके साथ. I think it's there's no differences. We are all the same people. शक्ल से या religion से थोड़ा बहुत differences अगर आप visually देखते हो, but deep down I mean, it's all in the same region, in the same place. So I think just just take it as one of you, or just do not sort of. Do you know what I'm trying to say? Because there's always the with minorities there is always sort of okay, आप यहाँ रहते हो, आपका खाना ऐसा है, आपकी ज़बान ऐसी है, आपकी शक्ल, which is great. I mean, these are elements, but at the same time, sort of do not sort of draw like rigid lines. If I'm making sense, yeah. You are making a lot of sense, Asif. You are making a lot of sense. Because these rigid lines are getting bigger and wider and more prominent. Absolutely. Absolutely. And I think, I mean, this film obviously is not just about people who live in Pakistan, but people who have left Pakistan. And, I mean, the trauma of staying back versus the trauma of leaving, and then feeling belonged, and then not making someone feeling belonged enough so that they leave. And then वहाँ की अलग जो है वो अपनी, एक मुसीबतें हैं basically when you do become, like a part of the refugee diaspora of sorts, in another country. So I feel like there's a lot to unpack. This is definitely, I mean, this is a painful subject. This is a sensitive subject. I think, like, on behalf of everyone watching, like, wants to say a big thank you to both of you, because I think To Bani. to Bani also, especially for making this film and taking the initiative to make this film sensitively and with a lot of empathy, because I think, I mean, yeah, you see, like, this is why, like, we should just watch a lot more films made by our own people. There is so much more to unpack when you're a local making a film about, some space and some people that you somewhat know, and then watching that, I think there's I mean, a lot also, I have to say it's very exciting. There's a documentary association of Pakistan and doing this, because now I think that at least one can. I hadn't been watching films before. Last time, I don't know whether you've had it online, but it really is inspiring. And like there's a forum to make documentaries. Yeah, and I hope we can do cool, lovely things together. If the one person is saying, isn't your colonization the fact that you're speaking in English? You talk of colonization, and yes, it completely is. And we are impoverished people. I'm an impoverished person because I speak English much better than Urdu. So that is all goes. It's part of the same thing. Yeah, and that could be said about the same thing. I mean, कि हम अगर उर्दू में भी कर रहे हैं, तो I think वो बच्चे जिनका आसिफ ने जिक्र किया कि उनको उर्दू बहुत कम आती है, I think ये चीज़ तो फिर उनके लिए भी accessible नहीं है, क्योंकि हज़ारगी में नहीं है. So I think colonization के तो बड़े तरीके होते हैं. Colonization तो उर्दू ने भी की है. Exactly. Colonization को अगर सिर्फ गोरा करता होता तो आज ये मसले ना होते पाकिस्तान के जो हैं. बिल्कुल. But on that note, I mean, I love how Asif is just smirking. But thank you so much, both of you. Thank you, Haya. Thank you, Haya. I think thank you for coming at a time which is so timely for this film, especially. I think this month is very relevant and very special for that purpose. So thank you. And then we are going to be back with another film 2 weeks down. Thank you so much. Thank you, Bani. Thank you so much. Everyone. What an honor, guys. Bye.